हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लर्न कर रहे हो एंड ग्रेजुअली यू आर गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स। लेट अस फॉर नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम यू कैन सी एंड दिस इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लो। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जो सरफेस है ना, ये तुम्हारा रफ है, यानी कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज देयर। द ब्लॉक इज पुल टू राइट, सो लेट अस पुल इट टू राइट। अगर आपके पास ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हो एंड ए ब्लॉक इज इनिशियली हियर एंड यू आर पुलिंग इट, अगर आप इसको पुल करोगे ना तो स्प्रिंग का क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। सो इट विल गेट लाइक दिस एंड यू आर पुलिंग इट अप टू व्हाट डिस्टेंस? Distance equal to x naught. So initially this is your x equal to 0 and this is, let's say, x equal to x naught. So up to this distance you are pulling it. डन है। सो अगर ये ब्लॉक यहाँ तक पुल करके लाए हो, यू आर स्टिल होल्डिंग इट, देन ओनली इट इज हियर। डन है। बिकॉज द as you will pull it, what will happen? A spring will apply a force on it in order to restore its position, in order to get back to its natural length, right? So the moment when you are taking it from x equal to 0 to x equal to x naught, during this period, at every position a spring is applying a force on the block in this direction, right? And as you are increasing this separation of x equal to 0 to x equal to x naught, जैसे block कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, you are slowly taking it from x equal to 0 to x equal to x naught. Why slowly I'm saying? Because there is no mention of acceleration in the question, right? So at every point you have made sure कि external force whatever you are applying is equal to the force that a spring is applying on the block. Done it. So net force is zero, and so you are able to just take it away, just take it away, and you are taking it finally away to the distance of x equal to x naught. So what I want to say is कि at x equal to x naught, what is the case here? अगर आप देखो तो केस सिंपल है। इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है in this direction. Now what will happen if you will release this? I mean, if you will release this external hold, if you are releasing this external hold under the influence of a spring force, it will start moving in this direction. Okay? And the moment it will start moving in this direction, there is relative motion happening between block and the surface. There is friction, so friction will oppose it. Friction force किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा. ठीक है? So friction is acting like this the moment you will be releasing it. Let's read the question first. It is elongated to x naught and then it is released. So we are releasing it. The block moves to left, yes, and stops at the position where the spring is relaxed. But when it is coming back to this position after getting released, at this position, its velocity is becoming zero. But in natural case where there is no friction, after you are releasing a block from certain extension, done hai, when it will again come back to the natural length position, that is at x equal to 0, that is equilibrium position, speed will be maximum, but here it is becoming 0. सो जब ये वापस यहाँ पे आता है ना एक्सटेंशन के बाद, यहाँ पे इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, देर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, सो टोटल एनर्जी इज जीरो। But the moment you are releasing the hold, at this instant, this system had some energy. The moment you are releasing it, at that moment, this block had no velocity, right? So kinetic was zero of this system, but in this system there is a spring, and a spring की energy कितनी रही होगी? So only potential energy of system is there, that is half k x naught का square, right? Because spring is extended by x naught distance. So the moment external hold is released, energy of the system is equal to potential energy half kx naught square, and the moment it is reaching at equilibrium position, it has no energy. So this much energy got eaten. कोई तो खा गया ना? कौन खाया? Friction. Done है? So friction has done negative work, and that negative work done by friction must be equal to this. ऐसे भी आप इसको फॉर्मूला वाइज भी लिख सकते हो। जैसे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगे द मोमेंट यू आर रिलीजिंग द होल्ड? वन फोर्स इज योर कंजर्वेटिव फोर्स, अनदर फोर्स इज योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? विच इज कंजर्वेटिव फोर्स? स्प्रिंग फोर्स, राइट? सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या लिखते हैं? माइनस डेल्टा यू plus work done by non-conservative force, that is friction. So that is equal to delta K.
and you know that delta K initial position is this one, final position is this one. Here kinetic energy was 0, finally is 0, delta K is 0, right? So work done by friction, that is friction force into displacement, that is x naught, क्योंकि ब्लॉक को वापस यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है, x naught. So if x naught will be equal to how much, magnitude wise I am writing, that will be, और चलो साइन देते हैं क्योंकि it will be important जब हम डेल्टा यू को लिखेंगे. So it is delta u. Now initial potential energy was this much. Final potential energy is 0 because there is no extension. So minus f x naught को आप क्या लिखोगे, minus half kx naught square, because delta u क्या लिखोगे, in final potential minus initial, final is 0. So 0 minus half kx naught square minus kx naught half kx naught square, right? So this is this. यहाँ से हमें friction force का value मिल गया कितना, kx naught by 2. So friction force is how much? Friction force will be constant and it is coming equal to kx naught by 2. Done है. So where will be the block having maximum kinetic energy? That is asked in the question. अब आप ध्यान से सोचो कि जब आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया था कितने लेंथ से, x नॉट लेंथ से एक्सटेंड किया था, एंड यू रिलीज्ड इट. द मोमेंट यू रिलीज्ड इट, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, kx इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है. इनिशियली x is almost equal to x naught, and in that case kx naught is greater than friction. So initially kx naught is dominating, and that is why block starting from a speed 0 is accelerating towards left, right? That is why block is going towards left. Done it? So it is accelerating towards left. It will accelerate, accelerate, accelerate until what point? Until extension in a spring has become such that kx will become equal to friction. क्योंकि इसके बाद तुम्हारा अगर अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हुआ है, वेलोसिटी जीरो हुई है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ब्लॉक फॉर सम डिस्टेंस हैज एक्सेलरेटेड, आफ्टर दैट इट हैज डीएक्सेलरेटेड. डन है. सो after what point it will start deaccelerating, somewhere they will become equal, right? So at that point we will say up to that point body has accelerated, so at that particular point body will have maximum velocity. So kx equal to f कर लो आप. So kx equal to f कितना आया था, kx naught by 2. So this is equal to this, x equal to x naught by 2. So at this position body will have maximum velocity. So ये यहाँ पर है, कहाँ पे है, x equal to x naught by 2 पर. अब आपको निकालना क्या है इस पॉइंट पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. लेट्स डू द एनर्जी, लेट्स अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगेन during the motion from point this P to point O, what is the force acting, friction and spring force. So conservative and non-conservative. So conservative plus non-conservative equal to delta K. And conservative के लिए क्या लिखते हैं हम, work done by conservative force is equal to negative of change in potential energy. Work done by non-conservative equal to delta K. ठीक है. We need to calculate delta K, right? So let's write it here. Work done by non-conservative कितना होगा, चलो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे. So work done by non-conservative कितना होगा, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा, it has traveled by what distance, x naught by 2, right? And work done by friction will be what, negative, because friction acting towards right, displacement towards left, and friction value is kx naught by 2. So this will be equal to minus kx naught by 2 into x naught. It is this. What will be change in potential energy? If you check here, here potential energy is half kx naught ka square, and here extension is how much, half k x naught square by 4, because it is x naught by 2. So change in potential energy will be how much, final minus initial. So half k को आप कॉमन ले लो, k x naught square को कॉमन ले लो, rather 1 by 4 minus 1, right? So this will become how much, minus 3 by 4. So minus 3 by 8 kx naught का square. Now minus delta u क्या हो जाएगा, 3 by 8 kx naught का square minus this equal to delta k. Now delta k will be equal to how much, finally it will have some kinetic energy. Initially it has started from that extreme end 0. So this is equal to how much, अब आप इसका value निकाल लो. So let us write it like something, work, this will be equal to how much, 3 by 8 k x naught square minus half k x naught
अच्छा, के एक्स नॉट बाई टू, एक्स नॉट बाई टू होगा, राइट? डिस्प्लेसमेंट क्या था? एक्स नॉट बाई टू था ना। देखो, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही थी, वही मैं सोच रही हूँ नेगेटिव क्यों आ रही है एनर्जी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। सो दिस इज हाफ के, सॉरी, 1/4 के एक्स नॉट का स्क्वायर, दैट इज के एफ। डन है। सो ये कितना आएगा तुम्हारा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। दिस विल बिकम 1/8 के एक्स नॉट का स्क्वायर एंड दिस इज योर के एफ. So this is going to be the answer. Done. So I hope you have understood it. I hope you have got what sort of motion is happening, which forces are acting, and how friction will do the things here, and why the block will gradually deaccelerate. These things are very simple. I know you must have got it. But even if you're having any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you.